Assalamu alaikum dear students. As you know that we have completed our previous work and we have done the learning of first chapter from PTB and its name is Fair Dealing of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और ये भी आप लोग जानते हैं कि हमने ये कंप्लीट करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मार्क कर लिए थे कि किस पैराग्राफ में किस क्वेश्चन का आंसर है. So today we are going to start our next work, and before starting our next work I'll take your dictation. So get your copies ready for dictation. What you have to do, you have to pause the video and you have to get your pen and your rough copy to do your dictation. So let's start dictation. Okay, it will be 5 marks test. Or what you have to do, okay, write first word is joyfully, next is blameless, welfare, क्लेम, अपराइट्स. बेटा मैंने ये जल्दी में बोल दी है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इस डिक्टेशन करेंगे और करने के बाद आप लोगों ने चेक कैसे करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे 6th क्लास की और फर्स्ट चैप्टर में से ही ये मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं. और पैराग्राफ कौन से थे जो लास्ट में हमने पढ़े थे, 5 और 6 में से ये मोस्टली वर्ड्स होंगे, तो आप लोग इसमें से चेक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव गॉट फुल मार्क्स, और बेटा इनके डोंट फॉरगेट टू राइट देयर उर्दू मीनिंग्स एज वेल, क्योंकि हमने उर्दू वर्ड्स मीनिंग भी पहले ही कर लिए थे, तो आप लोग दोनों उर्दू वर्ड्स मीनिंग भी चेक करेंगे और डिक्टेशन भी चेक करेंगे. और इफ़ यू हैव गॉट फुल नंबर तो दैट इज़ वेरी नाइस, इट्स मीन यू आर लर्निंग योर थिंग्स. एंड इफ़ यू हैव मेड एनी मिस्टेक तो व्हाट यू हैव टू डू बेटा, ओपन योर बुक एंड यू हैव टू क्विकली मेमोराइज इट राइट नाउ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों का टेस्ट हो तो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. Okay, and before starting our next work, let me show you something. This is our previous work which you have to do on your neat copy as well. This is your index. How you have to write it? First you have to mention the date, as we have completed our words Urdu meaning, so you will write dates like this. We have done page number 2 on 18 date and we have done page number 3 on 19. So you will write dates like this, and don't forget to show your work to your parents for signature as well. And let's have a look at the work, how you are going to do your work. So this is page number 1 on which we have done some of the words Urdu meaning. You have to manage your copy in the same way and your work should be neat. Okay, let's see the next 2 pages. So our words Urdu meanings are complete. You also have to write your work in the same way. Your work should be neat and you have to do it with your black pointer and blue pen. Okay, and be careful while you are writing your work. Okay, so let's start our next work. So dear students, as we have done words Urdu meanings, the next thing which we have to do on your neat copy is word sentences. और वर्ड सेंटेंसेस अगर आप लोगों को याद हो तो प्रेप 6 में भी वर्ड सेंटेंसेस आप लोग ही क्लास में किया करते थे. तो these are the words. Let me tell you the meanings of these words, and after that I'll give you some time. What you have to do, I'll write one word on the board, and what you have to do after this, you will pause the video and you will think about that word, कि how you can make your own sentence. Okay, and after that what you have to do, then you will show the next part of the video कि उसमें इसके क्या sentences हैं. If you made your own effort as well, so that will be very nice for you as well. Okay ji, let's start our work. Okay, let me tell you the meaning of these words first. Okay, first word is honest. जैसा कि हम लोगों ने टेक्स्ट में भी पढ़ा था, what is the meaning of honest? Its meaning is ईमानदार. Okay, next one is praise. Praise is तारीफ़ करना. शो दिखाना. बोरो उधार लेना. अवॉइड परहेज़ करना. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. ओके, सो this is our first word, honest, and you have to think about this word. As I've told you the meaning as well, its meaning is ईमानदार. तो सोचें कैसे इसका सेंटेंस बन सकता है. Okay, let me give you example as well. For example, we have read about text about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so you can say Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an honest man. Okay, in the same way you can write any name. You can, for example, you can tell about your sister that my sister is very honest, my father is very honest, my friend is very honest. So you can make sentence like this.
ओके बेटा, देर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। और एग्जाम्पल देखने से पहले एज आई टोल्ड यू कि आप लोग कोशिश ज़रूर करेंगे अपना सेंटेंस बनाने की। ओके, यू कैन मेक सेंटेंस लाइक दिस: माई सिस्टर इज़ वेरी ऑनेस्ट। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल: आई हैव एन ऑनेस्ट फ्रेंड। Ahmed is an honest boy. Okay, let's make a sentence for next word. So students, here we have another word which is praise, और इसका meaning है तारीफ़ करना. Okay, and you can use it like this in the sentences: my parents praise my good writing, my teacher praise my hard work, and people praise good deeds. And you have to pause the video now and you have to make your own sentence. As I've told you example now, in the same way you have to make your own sentence, and after that you will start seeing that video again. और फिर देखेंगे, आप देखेंगे बाद में कि आपने मैंने कौन से sentences बनाए, लेकिन उससे पहले आप लोग ट्राई ज़रूर करें कि आप क्या sentence बना रहे हो इसके साथ. So here we have a few examples for praise. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. They praised your new work, वो आपके नए वर्क की तारीफ़ कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड हैव टू नोटिस दिस ऑल्सो, कि डोंट फॉरगेट टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देयर शुड बी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. Okay, let's see at the last sentence: my teachers praise me for my good writing. So you can make sentence like this, and you should have to try your own sentences as well. Let's have a look on the next one. Okay, next word is show, and you can make sentence of show like this: I can show you my new bag, you should show me your new pencil, and I show my new ring to my friend. In the same way you can make sentence like this. Let's have a look on the other sentences. So these are sentences for show, and let's read them. They show us their new house. I can show her my new watch. You will show me your work. So next word is borrow, और borrow का meaning होता है उधार लेना. And you can make sentence like this: I borrowed a dress from my sister, and she can borrow my pen. In the same way you have to make your own sentences, and first you have to think about your sentence, and after that you will make have a look on my sentences. So these are sentences for borrow. Okay, let's read them. Can I borrow your pen? और बेटा यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ना हमने फुल स्टॉप लगाया ना हमने कुछ और चीज़ लगाई है, तो दिस इज़ अ क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस, तो इसलिए इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे? देयर शुड बी अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो कैन आई बोरो योर पेन, आई विल बोरो योर कार, यू कैन बोरो माई बुक. सो दिस इज़ द लास्ट वर्ड, अवॉइड, एंड इसका मीनिंग होता है परहेज़ करना या बचना किसी चीज़ से. ओके, एंड यू कैन मेक सेंटेंस लाइक दिस: आई विल अवॉइड टू टेल अ लाई, यू कैन अवॉइड टू गो आउटसाइड, एंड वी शुड अवॉइड टू ईट जंक फूड. So these are sentences for avoid, but beta, before looking at these sentences you should have to try to make your own sentence as well. Okay, let's read them. Ali should avoid to go outside. I will avoid to tell a lie. You should avoid smoking. So we'll meet inshallah in our next video, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और ये वाला वर्क आप लोग रफ़ कॉपी पर ज़रूर कर लें, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट वर्क lesson I'll show you how you have to do these sentences on your neat copy. Okay, until you have to do this work on your rough copy, and don't forget to learn it also. Okay, before you have to do your work on your neat copy you have to learn these sentences from your rough copy as well. Okay, we'll meet inshallah next time. Allah Hafiz.